All right, guys, good afternoon. How is everyone? Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, anyone wants to, before we move on to the next session, कल जो activity दिया था आपको, spend time matrix, anyone wants to share? Because if you do, then we have time now. We can share that. Anyone who wants to share that spend time matrix, please do it now. Any student who wants to share? If not, let me know, then I'll move on to the next topic. Okay, I guess not. Okay, is my screen visible to all of you? The art of storytelling. Yes, sir. Thank you. Okay. So we'll start off with this new topic. Since I guess the time management bit is clear to everyone, we'll start off with this new topic today, which is called the art of storytelling. Now, I'm not sure if you guys have been through such a topic before, but storytelling is a very important part of everything that we do. Even while giving a presentation, it is basically nothing more but a kind of storytelling itself, where I'm sharing with you what it is that what my story is, so to say. So let's go into detail and find out how we can learn this art of storytelling to make it more simple and more effective and more interesting. Okay. So do you believe storytelling is a great way to show your leadership and communication skills? Is this true or is this false? Do you believe? Yes or no? Yeah. Yes.
Okay, great. So as this question itself explains the fact that if you need to be a good leader, and if you need to be an excellent whatever your job role is, if you need to be good at it, you need to be able to have the skills necessary to storytell. If you're unable to do that, then your effectiveness as a leader or whatever job role you're in will be affected, because it becomes difficult for us to communicate with each other otherwise. Okay, so let's understand what is storytelling. Let's understand the basics first. What exactly is the meaning of storytelling, and what are the different aspects of storytelling that we need to pay attention to? And once we get these aspects, then we can do some activity to strengthen our skills and better our skills. So what is storytelling? Storytelling is, first of all, very ancient. ये कुछ नई बात नहीं है, स्टोरी हमको बचपन से मम्मी डैडी दादा दादी स्टोरी बोलते आ रहे हैं. सो स्टोरी टेलिंग इज वेरी एंशियंट. एक जमाना ऐसा था कि सब स्टोरी के थ्रू ही हमको जो नॉलेज थी पास ऑन होती थी, राइट? तभी बुक्स और सब नहीं थे, इतना नॉलेज अवेलेबल नहीं था. तो इट वाज थ्रू स्टोरीज दैट things information was passed on. So storytelling has always been a very important part of human society. नाउ एक स्टोरी में होता क्या है? एक स्टोरी में यूजुअली एक मॉरल होता है, एक लेसन होता है, एक सीख होती है, राइट? सो इट इज अबाउट कन्वेइंग नॉलेज, बिकॉज विदाउट दैट नॉलेज व्हाट इज द यूज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, राइट? कोई स्टोरी अगर तुम बताते हो उसमें कुछ नॉलेज होना चाहिए. कभी कभी हम स्टोरी सिर्फ जोक के लिए बताते हैं, लेकिन वो जोक में भी कभी कभी एक हिडन मैसेज होता है, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, it is not just about the story, it is about conveying some knowledge. Next point is, it is about conveying an experience. Ki when you're telling that story, this was the experience that I went through, and this experience is what I'm sharing with you. So these are primarily two important parts of a storytelling. You're either sharing your experience, or you're either sharing some knowledge, or you're doing both. So when you do both, I mean, it could be either one of them. It could either be knowledge or experience, or it could be both. That's up to you. But ये दो चीजें हमेशा एक स्टोरी में होती है, और ये important है. And literally, it is about nothing more than telling a story, right? So it's quite self-explanatory. And when we usually convey story, जब हम story बोलते हैं तो हम usually words use करते हैं, body language use करते हैं, और कभी कभी images भी use कर सकते हैं, या sounds भी use कर सकते हैं, right? और so that adds more effect to our story. So for example, अगर हवा का आवाज निकाला ऐसे हू करके हवा आई, तो whatever, something like that. Or it could be a dog barking, and then you actually bark like a dog or growl like a lion, or whatever. So in different scenarios, you can use these sounds to express the fact that you are telling the story. Or you can also use images. There are a lot of ways in which you can effectively communicate a story to someone. But important point again, to reiterate, it is about conveying experience and conveying knowledge. ये दो चीजें हमेशा याद रखना. If your story does not have any of these two, then you are missing a very crucial point in storytelling. Okay. What are the benefits of storytelling? Storytelling has strong and unique benefits. Sharing and transferring of knowledge and experience strengthens human relationships. What happens when you share stories with other people? It strengthens the human relationship. ये अभी पॉइंट आप जब हमने प्रेजेंटेशन के बारे में भी बात किया था, आपको बताया मैंने कि जब आप स्टार्टिंग ओपनिंग करते हो आपका प्रेजेंटेशन का, एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के साथ, राइट? सो इट इज द सेम थिंग हियर एज वेल. You have to, because that story forms that emotional connect. When you tell something personal about that has some emotional content in it, then automatically you tend to form a bond, and it strengthens human relationships. So telling stories strengthens human relationships, then brings out passion of audiences. What is the meaning of brings out passion of audiences? Because they are able to emotionally connect with you, because they feel that connect when you're talking to them, and they're able to relate to your story, your experience, and your emotion. It brings out the passion of the audience as well.
Then it also helps develop imaginative skills of audience. अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सीख से आपका इमेजिनेशन बढ़ रहा है, राइट? जब मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको कुछ नया बताता हूँ, then your imagination also improves and increases. So it helps you develop imaginative skills. And so when I'm telling you a story, you are imagining in your mind and you're developing those skills. So that is also important. Last point, has strong emotional content, therefore relatable. Again, yeah, emotional content is the only reason why you also, it strengthens human relationships, and it also brings out the passion in audience, and is also a strong way to connect. So these are the some of the benefits of storytelling. I'm sure there are many more, but these are the most important points we can keep in mind. Let's move on now to understand the, okay, anyone has any questions so far on storytelling? Any questions so far? No, sir. Okay. Okay. So let's understand some of the principles. Okay, thank you. Some of the principles of storytelling. Now, a storyteller must have good presentation skills. Presentation skills तो हम लोग ने already cover कर दिया है. हमेशा स्टोरी के साथ प्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं है, पर बताने के लिए बता रहा हूँ कि इट इज आइडली आज के जमाने में जब कोई भी कुछ बोलता है तो एक प्रेजेंटेशन होता ही है, राइट? सो इट इज अ गिवन कि every storyteller must have good presentation skills as well. इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंटेशन होना जरूरी है आपके पास, पर जो प्रेजेंटेशन के स्किल्स होते हैं वो होना बहुत जरूरी है, जो आपके पास ऑलरेडी अब तक आप समझ चुके हैं सब प्रेजेंटेशन के स्किल्स क्या है. Must be well prepared, must maintain eye contact with the audience. Preparation is without saying, preparation तो होना ही चाहिए. Must maintain eye contact, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है eye contact हमेशा ऑडियंस के साथ मेंटेन करना. इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस में घूरते रहो ऐसे किसी को, बट यू कीप लुकिंग एट द ऑडियंस, यू नो, ऐसे नजरें सब जगह ऐसे keep looking at everyone so that you're maintaining that eye contact. Then you need to be enthusiastic, passionate, and confident. Obviously, enthusiasm, passion, and confidence are important, because if you sound sleepy and boring, then people will not be interested. Good speaking skills, voice modulation, volume, and rate of speech. ये बहुत ही सिंपल है. जब आप कुछ स्टोरी बोलते हो, अगर आपके स्टोरी में इमोशन है तो ऑब्वियसली आपका वॉइस मॉड्यूलेट होगा ही, वॉइस ऊपर नीचे जाएगा, वॉल्यूम भी वो हिसाब से आप एडजस्ट करोगे, कितना फास्ट कितना स्लो बोलना है, ताकि सामने वाला समझ पाए कि आप क्या स्टोरी बता रहे हो, राइट? सो गुड स्पीकिंग स्किल्स रिक्वायर्स वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉल्यूम, एंड रेट ऑफ स्पीच. लास्ट बट नॉट लीस्ट, गुड यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से आपका टोन, आपका जो एटीट्यूड और सब है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके आवाज में. तो आपका बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, और वो सामने वाले को समझ में आता है कि ये एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही मतलब लेड बैक एटीट्यूड या जो भी वो है, लेजी है, लेथार्जिक है, और सिर्फ बताने के लिए बता रहा है, ऐसा it will come across very evidently. So always ensure you're using good, strong body language, standing straight, sitting straight, talking confidently, using your hands while talking. So these things are very important. So these are some principles of storytelling. I want you guys to take a screenshot of this and remember these points, because when you do your storytelling with me, I want to see these attributes, these principles at work. तो आपको मैं एक्टिविटी दूंगा जहां आपको स्टोरी टेलिंग करना है मेरे साथ, ठीक है? तो make a note of these points and please read them once again and let me know if you have any doubts.
Okay, let's move on to the next slide. I'm assuming the slide is clear. Principles of storytelling. Next slide is uses of storytelling in an organization. एक organization में storytelling करने के क्या फायदे हैं? For example, it transforms communication, transfer knowledge to employees, you share learning, addresses the heart of the employees, is genuine as is personal, as is a personal experience, offers practical knowledge as is from personal experience, and stories are more persuasive. And last but not least, makes a learning experience interesting and fun. अब ये सब पॉइंट्स क्या है, ये जब हम ऑर्गेनाइजेशन, जब हम काम करेंगे, जब आपका जॉब होगा और जब आप फुल टाइम जॉब करेंगे या जो भी पार्ट टाइम, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये भी जब इंफॉर्मेशन मतलब आपको सिखाते हैं कुछ नया, तो यूजुअली स्टोरी टेलिंग ही यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन होता है और फिर एक स्टोरी के जैसा आपको सिखाते हैं. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. एक स्टोरी इज वेरी पर्सुएसिव. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आपको अगर किसी को कुछ भी समझाना है तो चांसेस अच्छे हैं कि अगर आप स्टोरी में समझाओगे तो वो और अच्छे से समझेगा, बिकॉज स्टोरीज आर मोर इजिली रिलेटेबल एंड वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर यूज्ड टू लर्निंग थिंग्स फ्रॉम स्टोरीज. हमको स्टोरी सुन के समझने की आदत है. और स्टोरी में क्या होता है, आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो, और अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो फिर अपने आप वो नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, थियोरेटिकल नहीं हो गया, राइट? सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई it is always good to put stories which have personal experience and practical knowledge, because then it is easy to relate to. और एक बार एक ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर लिया तो फिर you know then it reaches the heart of the audience, so it's very easy to convince them, and it's easy for them to remember also. Okay, so this is the uses of storytelling in an organization. Fairly simple, nothing to be nothing to ponder over too much. But if you have any questions, let me know. If not, we can move on to the next slide. Okay. Then now some other points about the fact that we are all storytellers. अभी आपको ये एहसास हुआ है अब तक कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर ये काफी ऑब्वियस है कि हम सब स्टोरी बोलते हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में. हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ हमेशा हर मोमेंट में एक स्टोरी, हम स्टोरी ही शेयर करते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट हुआ. सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी. तो वी आर ऑल बॉर्न स्टोरी टेलर्स. हम सबको स्टोरी बोलने की ऑलरेडी आदत है. सिर्फ इतना है कि हम वो कॉन्शियसली नहीं बोल पाते, मतलब कॉन्शियस नहीं है, हम कॉन्शियसली हम लोग नहीं बोल रहे, हम ऐसे ही मतलब ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हमारी वो आदत है. तो हमको क्या करना है, जो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस आदत है इसको थोड़ा कॉन्शियसली हमको डायरेक्ट करना है, ताकि वी बेटर द आर्ट ऑफ बीइंग बेटर स्टोरी टेलर, राइट? So we grew up listening to stories and tales. We also share stories about ourselves with friends, families, and colleagues. We are intuitive storytellers. So what we're going to do right now is practice a little bit of storytelling in this entire session. What we want to do is we want to perfect our art of storytelling so that we can do better and share our story in a better way. Now, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लाइड के बाद एक क्विज है और उसके बाद आपका एक्टिविटी है. वो एक्टिविटी में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, तो मैं आपको ये सब पॉइंट्स एक बार समझाऊंगा और फिर आपको आपका खुद का टॉपिक सिलेक्ट करना है और फिर एक स्टोरी बताना है, मतलब पूरे क्लास को मुझे आपको एक स्टोरी सुनाना है. तो इट कुड बी एनी टॉपिक, बट द स्टोरी नीड्स टू हैव दीज guidelines, so to say. These are some guidelines when you do the activity. First point, you decide on a story. Find ideas worth spreading. Get rid of unnecessary stuff. If it does not interest you, then do not share it. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टोरी डिसाइड करना. आप किसके बारे में बात करेंगे, ये लिमिटेड नहीं है, आप कोई भी चीज को लेके बात कर सकते हैं.
आपके कॉलेज के बारे में, आपके स्कूल के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, एक मूवी के बारे में, कोई हिस्टोरिक इवेंट के बारे में, कोई भी स्टोरी हो सकता है, मूवी के बारे में, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी एनी स्टोरी, ओके, बट इट शुड हैव आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग, मतलब कुछ होना चाहिए उसमें सुनने लायक। सिर्फ ऐसा एक Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down, both came tumbling after. ऐसा नहीं, कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए, या कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपको शेयर करना है ऑडियंस के साथ, राइट? सो देयर नीड्स टू बी सम आइडिया वर्थ स्प्रेडिंग, सम नॉलेज और सम एक्सपीरियंस. Secondly, you have to speak from the heart, so it has to recall genuine experience and emotions. तो अगर आप कुछ भी हाइपोथेटिकली मनगढ़ंत ऐसा कुछ बनाया आपने, तो फिर वो नहीं आएगा. So it has to be genuine. You have to speak from the heart. You have to recall genuine experiences and emotions. And last but not least, practice. So as you keep practicing, you will keep getting better at storytelling. So what I want you to do is take a screenshot of this screen and keep it with you, because after the quiz, we are going to jump straight into the activity where you will pick your topics, any topic of your choice, and you have to tell me what topic you're picking, and then we'll give you some time to prepare, and then we'll go ahead with the story. Okay, is this slide clear to everyone? Create your own story, how to create your own story. Yes, sir. Okay. What about the rest of the students? Yes, sir. Okay. Okay, let's do a very small quiz and see how much we have understood from this presentation. So you guys can either give me the answers in the chat or just reply to me. What is the meaning of audience persona? An audience persona is option A, the person in the audience you like the most. An individual, option B, an individual representation of the entire audience. Option C, a list of questions. D, a large faceless group of people. What is the meaning of audience persona? Any ideas? Option B, I guess. B, an individual representation of entire audience. Okay, what's your name? Harshada Golve. Harshada. Okay. Thank you, Harshada. So Harshada says the answer Second. is, sorry? और एक स्टूडेंट ने दिया था सर, मैं और वो. Okay. Chaitrali Kulkarni. Okay, so Harshada and Chaitrali say that the answer is option B, an individual representation of entire audience. What does the rest of the class think? Anyone else has any other answers? Okay, so I guess no one has any other answers, but the answer is correct. Yes, it's an individual representation of entire audience. Thank you very much for that answer, Arshada and Chitrali. It's the right answer. So audience persona क्या होता है? Audience
थैंक यू मयूरी. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑडियंस पर्सोना क्या होता है कि एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर ऑडियंस. अगर आपको ऑडियंस, अभी समझो ये क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, राइट? अभी आपको स्टोरी बताना है. जब आप स्टोरी बताते हो तो आप सब 60 स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच सकते हो. आपको एक ऐसा स्टूडेंट पिक करना है जो पूरे क्लास के मिडिल रेंज में हो, मतलब he can represent the entire class, not the best student or not the worst student, but a proper uh, you know somewhere in the middle. अगर उसको समझ में आ गया स्टोरी तो chances are the whole class will understand, the whole audience will understand. So you have to have that idea कि मैं जिसको स्टोरी बताने वाला हूं या बताने वाली हूं वो इंडिविजुअल कैसा है. So that is very important. Okay. Let's move on to the next one. What's the main objective of storytelling? Option A, to educate the audience and develop a sense of empathy, to amuse and please the audience, to discuss features and benefits, or D, to change audience behavior. A. A. Who said the answer? Harshada. Okay. So Harshada says the answer is A, to educate the audience and develop a sense of empathy. Does anyone have any other ideas what the answer is? Reshma says option A. Okay. Okay, the answer is right. It is option A. Good job. To educate the audience and develop a sense of empathy. देखो कभी कभी आप अम्यूज प्लीज भी कर सकते हैं ऑडियंस को, पर that's not really the goal of storytelling. Storytelling is always about educating the audience, and empathy क्या होता है, where they are able to relate with you and relate with your emotions. So it's about developing a sense of empathy. Okay, now let's get on to the activity. Like I said before, create your own story or make your story looking at any given picture. अभी ये pictures आपको देख के story बनाने की जरूरत नहीं है. What I want you to do is I want you to keep those points in these points, and I want you to come up with the story. But what I need from you before that is I want to know what is your topic of the story. So can all of you take a few minutes and think of a story, decide on a story, मतलब एक topic आपके story के लिए. This is an individual activity, okay? I don't want groups for all this activity. So you decide on whatever your topic is. Say for example, student A, my topic is what topic? The Titanic. I want to tell the story about the Titanic. Remember, your story needs to have some ideas worth spreading, and it needs to speak from the heart. Some genuine experience and knowledge needs to be there. So first, what I want you to do is decide on your story and reply to me with what your story is. What is your topic? Is that clear? Yes, sir. Okay, thank you. और हाँ, मुझे प्रेजेंटेशन और कुछ जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ स्टोरी सुनना है. प्रेजेंटेशन इमेज कुछ देखने की जरूरत नहीं है. अगर आपको करना है वो बात अलग है, पर आई डोंट नीड इट. आई जस्ट नीड अ स्टोरी. So right now only. Yes. You can reply to me with your topic right now, and story फिर आप 10-15 मिनट लेके बाद में you can tell me the story. But topic you decide first and tell me. Okay?
Okay, so Harshada, is that your reply, Harshada? Teacher, you will never forget. हाँ sir, yes. Okay, cool. Thank you so much. You can prepare the story, all right? And when you're ready, you let me know. Yes sir, sure. Thank you. Come on guys, टॉपिक पिक करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. अगर अगले 2 मिनट में मुझे सब 26 स्टूडेंट से रिप्लाई नहीं आया ना टॉपिक को, तो मैं आपके सर को अभी कॉल करके सबको एब्सेंट मार्क करा रहा हूँ. कि मुझे अभी सच में समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्लास में एक्चुअली प्रेजेंट हो कि नहीं हो. रेशमा कॉल पे आई है ना, मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हो. सर द महाभारता पर मैं स्टोरी बना सकती हूँ क्या? हाँ, लेकिन आप महाभारत स्टोरी बोलते बोलते पूरा दिन नहीं खत्म होना चाहिए. 2-3 मिनट में हो जाएगा आपका स्टोरी बोल के. यस सर, बट मुझे स्टोरी के लिए एक दिन तो चाहिए सर. हाँ ठीक मैं है, तो कल 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 भी आप यस बता सर, सकते हैं. यस सर, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगी. हाँ ठीक है. आपका टॉपिक क्या है? महाभारत. यस सर, द महाभारत. हाँ, द महाभारत. द महाभारत. ओके, महाभारत. ओके, कूल. नाइस टॉपिक, इंटरेस्टिंग रहेगा ये सुनने. सर क्या मैं भी कल बता सकती हूँ? कौन, हर्षदा? हाँ सर. हाँ ठीक है. मुझे लगता है आप सबको कल ही बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी 10 मिनट में स्टूडेंट्स ने ये भी डिसाइड नहीं किया कि कौन सा टॉपिक बात करना है. सर कल ही मुझे बताना. ऑर्फन बॉयज और गर्ल्स होते हैं उन पर एक स्टोरी बनानी है, मैं कल बता सकती हूँ. नाम बताइए आपका प्लीज. चैत्राली कुलकर्णी. चैत्राली. हाँ, आप कौन सा टॉपिक बोल रहे हैं आप? ऑर्फन बॉय और गर्ल. अच्छा ठीक है. टॉपिक एग्जैक्टली ऑर्फन बॉय एंड गर्ल, ऐसा नाम रहेगा स्टोरी का. हाँ चैत्राली. सर मेरी तरफ से इसलिए मैं क्लियरली बात नहीं कर सकती. नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी. सर आपकी आवाज नहीं आ अच्छा सर ठीक है, नेटवर्क. आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ. ठीक है, चैट पे बोलिए ना मुझे आप. मुझे सिर्फ टॉपिक चाहिए, आपके स्टोरी का टॉपिक क्या है? ऑर्फन बॉय एंड गर्ल बोला आपने ये. ऑर्फन बॉय की स्टोरी. ओके ठीक है. ओके, हु एल्स? लेकिन प्लीज आप प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर बाद में पता है कल भी आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा फिर. ठीक है, अभी पूरे क्लास में से मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है जिन्होंने टॉपिक दिया है मुझे. बाकी के स्टूडेंट्स किधर है?
Snehal, are you there? Snehal, Vaishnavi, Shweta. यस सर. आपका नाम बोलिए. श्वेता. श्वेता, आपने टॉपिक डिसाइड किया अभी तक? यस सर. क्या टॉपिक है? द ग्रेट किंग. द ग्रेट किंग. किंग का नाम आप स्टोरी में बताएंगे? हाँ सर. अच्छा, ये अभी आज कर सकते हैं आप? नहीं सर, कल. अच्छा, ठीक है. ओके, थैंक यू श्वेता. रेशमा, स्टोरी टेलिंग ग्रुप एक्टिविटी नहीं है यार. मतलब ग्रुप में स्टोरी बोलना लास्ट टाइम की तरह, फिर एक ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, एक एक, मतलब पूरा स्टोरी ग्रुप नहीं बोल पाएगा. प्रेजेंटेशन है तो बात अलग है. और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है. ये मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स थोड़ा टॉपिक डिफरेंट था ना, तो उसमें उतना टाइम हम दे सकते थे प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए. स्टोरी टेलिंग में हम वापस ग्रुप में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास. बट थैंक यू फॉर योर सजेशन रेशमा, थैंक यू. ओके, अरे बॉयज किधर है? बॉयज प्रेजेंट भी है क्या आज क्लास में? गोविंद, अभिषेक, रवि, शुभम, अथर्व, आदेश, विशाल, किधर हो आप लोग सब? यस सर. यस सर. क्या सवाल पूछ के 15 मिनट हो गए मुझे, टॉपिक नहीं बताया आपने अभी तक. सर अभी तक टॉपिक का नेम ही नहीं डिसाइड किया. क्या अभी तक टॉपिक डिसाइड नहीं किया अभी तक. अरे इतना क्या डिसाइड कर रहे हैं? पार्लियामेंट में क्या बिल पास कर रहे हैं क्या हम लोग? एक टॉपिक नहीं मालूम. आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? एवेंजर. एवेंजर, वेरी गुड. चलो अभी एवेंजर के बारे में, एवेंजर की स्टोरी बताओ मुझे. अभी हाँ, देखिए ना आपने मूवी, सर हाँ देखिए ना. तो बताओ ना, स्टोरी बताओ ना, एवेंजर में क्या होता है? सोचो कि आप एक दोस्त के साथ बैठे हो और वो दोस्त ने एवेंजर मूवी नहीं देखी और आपको उसको स्टोरी बतानी है, तो आप बता नहीं सकते उसको? सर बता सकते सर, कल बताऊं तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा. सभी सब कल ही बोल रहे हैं, इसलिए तो मैं आपको आपकी फेवरेट मूवी बोल रहा हूँ यार. अगर मेरी फेवरेट मूवी बोला होता तो फिर मैं बोलता चलो कल तक प्रिपेयर कर लो आप. आपकी फेवरेट मूवी है. अच्छा, आप ये बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे इजी लगता है बात करने के लिए? विच टॉपिक आर यू मोस्ट कंफर्टेबल विद टॉकिंग? सर लाइव इंसिडेंट्स पे. ठीक है, चलो एक लाइफ इंसिडेंस बताओ आपका फेवरेट जो भी है. कुछ भी बताओ, कुछ भी इंस्टेंस बताओ. 2 मिनट के लिए आप बात करेंगे, मैं सुनूंगा सिर्फ. कहाँ चला गया? सर यही सोच रहा अच्छा, सोच रहे. मुझे लगा चला गया. नहीं सर, कौन सा बताओ नहीं पता चल. हाँ, कौन सा बताओ वो नहीं कर पता चल रहा हो. अच्छा.
कौन सी भी एक स्टोरी बताओ यार, इतना क्या सोच रहा है? कौन सी भी स्टोरी। स्टोरी ऐसा मतलब स्टोरी जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो कौन सा भी। अच्छा, ये क्लास का अटेंडेंस कौन ले रहा है आज वैसे? मुझे माधुरी तो नहीं दिख रही है। माधुरी एब्सेंट है क्या आज? हर्षदा, यस सर। ये अटेंडेंस कौन ले रहा है आज क्लास का? माधुरी एब्सेंट है सर आज। आज कौन ले रहा है पता नहीं, आई डोंट नो। ओके, लेना है फाइंड क्या? आउट। हाँ मतलब नोट करके लेना है क्या आज के सब रोल नंबर्स? हाँ, मैं आपको जो बताऊंगा ना, एक्चुअली आपके क्लास के सर प्रोफेसर कौन है, जो क्लास इंचार्ज कौन है? सीसी क्लास कोऑर्डिनेटर सूर्य से सर है सर। अच्छा, और जो योगेश सर है वो सिर्फ कोऑर्डिनेटर है क्या, या? अच्छा, नहीं योगेश उनका वही फर्स्ट नेम वही 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 है ना? हाँ। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। मैं ओके सिर्फ सर। बताना चाहता हूँ पूरे क्लास को कि मेरे मेरे ना आज पूरे दिन में सिर्फ हर्षदा, रेशमा, चैत्राली, श्वेता और अभी शुभम शुभम अभी सोच रहा है। पूरे क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने मुझे रिस्पॉन्स किया अभी तक। और ये स्टूडेंट्स, ये क्लास का कुछ 60-65 हेड काउंट है। आज के दिन ना बाकी सबको मैं सर को बोलने वाला हूँ कि ये स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मुझे बाकी चाहिए भी नहीं इधर पार्टिसिपेंट्स। मैं ये 5 पार्टिसिपेंट्स के साथ खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये नंबर दिखता है यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो उनको एब्सेंट मार्क करना या फेल करना है क्लास को, जो भी है, आई डोंट केयर। पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे, मतलब मैं बैठूं और सोचूं कि ये लोग आएंगे मेरे से बात करेंगे, दिस इज नॉट डन। तो इससे अच्छा आप लोग सब क्लास में आइए ही मत। जिसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, इंटरैक्ट करना है क्लास में, वो लोग ही आइए। ये इधर फ्री टीवी का प्रोग्राम नहीं चालू है जो आप मोबाइल को एक कोने में रख के फिर गायब हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ योगेश सर से बाद में। शुभम, सर कल ही बताता हूँ सर। अबे अभी नहीं बताया तो कल कैसे बताएगा तू? कौन सा आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? चलो एक बात बताओ मुझे, ऑटोबायोग्राफी पता है क्या होती है ऑटोबायोग्राफी? हाँ पता है ना सर। ओके, वेरी गुड। अभी तुमको प्यार हुआ है कभी लाइफ में? सर अभी तक तो नहीं हुआ। प्यार भी नहीं हुआ अभी तक? अरे बाप रे। अच्छा, सबसे नहीं सर, पहली मूवी कौन सी देखी तुमने, सबसे पहली मूवी? सबसे पहले मैं बचपन में देखी थी सर, अभी तो याद नहीं है। अच्छा, पहली मूवी भी याद नहीं है। अच्छा, सबसे फेवरेट हिंदी मूवी कौन सी है? हिंदी मूवी भी नहीं याद है फेवरेट? सर फेवरेट ऐसी कोई नहीं, मैं जो देखता हूँ अच्छा, जेन्युइनली देखता हूँ। फेवरेट नहीं है। क्रिकेट पसंद है? सर क्रिकेट तो आता ही नहीं है। क्रिकेट भी नहीं सर आता है? क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, एक बात, अच्छा चलो मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली में क्या है, तुम्हारी फैमिली की स्टोरी क्या है? कौन कौन है फैमिली में, कहाँ से है तुम लोग? सर हमारे फैमिली 10 पर्सन है अभी तक। 10%? हमारे को यस सर 10 जॉइंट फैमिली। ओके। हाँ उसमें मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, माँ बाप और भाई बहन है, और अंकल आंटी और उनके 2 बेटे। ओके, और तो क्या करते हैं फैमिली में सब? सर हमारे यहाँ ड्राइविंग करते हैं, मतलब हमारे यहाँ 2 बड़ी गाड़ियाँ है वो चलाते हैं। और हमारे फादर, अरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं।
ओके, क्या गवर्नमेंट जॉब थी उनकी? हाँ सर, सर्कल में थे, रोड कंस्ट्रक्शन का काम लेते थे अच्छा, तहसील में, और तलाठी आपके ऑफिस दादा में। ने आपको कभी कोई स्टोरी नहीं बताई? सर वो काम में बिजी रहते थे। सर बचपन में वो बच्चों वाली स्टोरिया सुनाते थे। हाँ, सुनाई है ना स्टोरी, सुना ना आपने वो स्टोरी? सर अभी तो याद तो नहीं होंगे। अच्छा, तो आज घर पे जाएंगे ना तो दादा को बोलना वापस कि दादा आज मेरे सर ने पूछा मुझसे एक स्टोरी बताने, और मुझे आपकी एक भी स्टोरी याद नहीं है। सर मेरे दादा मेरे को क्या कहेंगे फिर? चमाट मारेंगे एक जोर से। ठीक है, तो एक अभी कल आप मुझे अभी टॉपिक नहीं बता रहे हो, मतलब कल भी आप नहीं बताने वाले कुछ? सर रात एक को टॉपिक तो डिसाइड। एक टॉपिक डिसाइड करो अभी, और कल प्रिपेयर करके आओ, नो प्रॉब्लम, पर एक टॉपिक तो डिसाइड करो कम से कम। शुभम, एक टॉपिक डिसाइड करो कम से कम। सोचो, 2 मिनट देता हूं आपको और। अच्छा, बाकी के स्टूडेंट्स और कोई है? कोई जागा है अभी? ये आइडिया अच्छा है।
मतलब पूरे 1 घंटे में मैं ही बात करूं, अभी स्टोरी टेलिंग के टाइम पे मैं ही स्टोरी बोलूं। मैं नहीं बता रहा कोई स्टोरी आप लोगों को। चैत्रानी मैसेज कर रही है, सर हमारे पास 4 मिनट है, तो आप एक अच्छी स्टोरी बताओ। मैं नहीं बता रहा, मुझे सब स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स चाहिए पहले। सो मतलब शुभम टॉपिक जस्ट सॉरी, हाँ बोलिए। सो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरी हो तो चल सकता है क्या? मतलब अगर हाँ, अरे कुछ भी। अभी अब आपके फ्रेंड्स के साथ बैठते फिर हो, उससे कुछ सब बातें नॉलेज करते कन्वे हो ना, नहीं होगा तो इसलिए पूछ रही हूँ। एक्सपीरियंस ऑल्सो इज नॉलेज ओनली ना। एक्सपीरियंस में भी नॉलेज ही होता है ना। हाँ ओके। तो इट्स ओके, अगर अगर नॉलेज ऐसा स्पेसिफिकली नॉलेज नहीं है तो नो प्रॉब्लम। शुभम, टॉपिक डिसाइड किया? शुभम गायब हो गया। ठीक है, तो अभी कल हर्षदा टीचर यू नेवर फॉरगेट, रेशमा द महाभारता, चैत्राली ऑफन बॉय की स्टोरी, श्वेता द ग्रेट किंग, और शुभम प्लीज कुछ सोच के आइए। बाकी के स्टूडेंट्स, आप सबको पता नहीं अभी मैं क्या बोलूं, पर ठीक है। गाइस प्लीज कम प्रिपेयर्ड फॉर योर स्टोरी विथ योर स्टोरी टुमारो। ज्यादा लंबा स्टोरी जरूरत नहीं है, 2-3 मिनट्स इज फाइन। पर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है स्टोरी बोलना तो यू कैन टेक इट अप टू 5 मिनट्स मैक्स। उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, 5 मिनट्स इज द मैक्सिमम लिमिट। ओके, Yes. थैंक यू। अच्छा, नॉट टुमारो, सॉरी, कल कल छुट्टी है। मतलब मेरी छुट्टी है, आपकी छुट्टी है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो ये मंडे को होगा, ओके? आज फ्राइडे है तो मंडे। आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे फॉर योर स्टोरी टेलिंग। तो Yes, 2 दिन sir. है, सॉरी। No, sir. No, sir. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी 2 दिन है आपके पास स्टोरी टेलिंग के लिए। तो मंडे को आप मंडे को मिलेंगे हम लोग, मतलब मैं तो, हमारा सेशन तो मंडे को होगा। ठीक है, गुड बाय गाइस। हेलो सर। ऑलराइट, सी यू मंडे। हाँ, यस। हेलो सर, मैं ट्रिप के बारे में बताऊंगा मेरे। कौन सा ट्रिप? हैदराबाद ट्रिप है सर। ओके, माय हैदराबाद ट्रिप, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो मंडे तक आप पूरा प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच शुभम। हाँ सर, रहते तब नेटवर्क इशू था, हाँ, नो इसलिए बात नहीं प्रॉब्लम, कर रहा था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा आप चले गए, मतलब दादा के नहीं पास सर। स्टोरी पूछने। All right, thank you very much guys, see you on Monday, take care, have a good weekend, bye bye.